নমস্কাৰ এ নিউজ কেন ষ্টুডিঅ'ত মই কৃপাঞ্জল ৰাজবংশী প্ৰথমটো খবৰ তেজপুৰৰ পৰা তেজপুৰত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেজপুৰত আজি কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত তেওঁ অংশ ল'ব টিএমচিএইচত মুখ্যমন্ত্ৰী শিশু আইচিইউকে ধৰি মুকলি কৰিব তিনিটাকৈ প্ৰকল্প লগতে আজিয়ে তেজপুৰত মাইক্ৰ'ফাইনেন্স ঋণ মাফৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ আৰম্ভণি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঋণগ্ৰস্ত মহিলাক প্ৰদান কৰিব তেওঁ চেক মুঠ 11 লাখ ঋণগ্ৰস্ত মহিলাক প্ৰদান কৰা হ'ব চেক প্ৰথম পৰ্যায়ত 3 লাখ মহিলাক প্ৰদান কৰিব চেক আৰু এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তেজপুৰত গৈ উপস্থিত হৈছে কেইবালানিও তেওঁ কাৰ্যসূচী হাতত লৈ আজি তেজপুৰত উপস্থিত হৈছে ইয়াত টুমুকিস্থিত টিএমচিত তেওঁ মুকলি কৰিব বেবী আইচিইউ আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ ঋণগ্ৰস্ত যিসকল মহিলা তেওঁলোকক প্ৰদান কৰিব চেক সেই কাৰ্যসূচীটো তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব ইতিমধ্যে এয়া টুমুকি মেডিকেল কলেজত তেজপুৰ মেডিকেল কলেজত টুমুকিস্থিত তেজপুৰ মেডিকেল কলেজত তেওঁ উপস্থিত হোৱাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ তেওঁ উপস্থিত হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে তেওঁ মুকলি কৰিব বেবী আইচিইউ আৰু তাৰ পাছত ঋণগ্ৰস্ত মহিলাসকলক তেওঁ চেক বিতৰণ কৰিব প্ৰথম লাইনত 3 লাখ মহিলাক ঋণগ্ৰস্ত মহিলাক চেক প্ৰদান কৰিব 11 লাখ ঋণগ্ৰস্ত মহিলাক চেক প্ৰদান কৰাৰ কথা তাৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত 3 লাখ মহিলাক তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব চেক মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰণি জনাবলৈ উবুৰি খাই পৰিছে তেজপুৰীয়া ৰাইজ পুৱাৰ পৰাই সাংস্কৃতিক নগৰীখনত সৃষ্টি হৈছে উখল মাখল পৰিৱেশৰ ইতিমধ্যে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিপৰীতে অসম মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ উদগনি আৰু ৰেহাই আঁচনি 2021ৰ শুভাৰম্ভণিক লৈ ৰাইজৰ মাজত দেখা গৈছে ব্যাপক উলাহ প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰাজ্য চৰকাৰে 8 জিলাক এই আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব তেজপুৰ কলেজিয়েট হাইস্কুল খেলপথাৰত দিনৰ 11:30 মিনিটত কলেজিয়েট হাইস্কুলত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শোণিতপুৰ জিলাৰ সৰ্বমুঠ 59,544 গৰাকী মহিলাই এই আঁচনিৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ আজি তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেশবাসী সম্বোধি মন কী বাত অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিম আপোনালোকক इसमें रानी दुर्गावती के अदम्य साहस और बलिदान की यादें ताजा की गई है ऐसा ही एक कार्यक्रम काशी में हुआ गोस्वामी तुलसीदास संत कबीर संत रैदास भारतेंदु हरिश्चंद्र मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद जैसे महान विभूतियों के सम्मान में 3 दिनों के महोत्सव का आयोजन किया गया अलग अलग कालखंड में इन सभी की देश की जन जागृति में बहुत बड़ी भूमिका रही है आपको ध्यान होगा मन की बात के पिछले एपिसोड्स के दौरान मैंने 3 प्रतियोगिताओं का उल्लेख किया था कंपटीशन की बात कही थी एक देशभक्ति के गीत लिखना देशभक्ति से जुड़ी आजादी के आंदोलन से जुड़ी घटनाओं की रंगोली बनाना और हमारे बच्चों के मन में भव्य भारत के सपने जगाने वाली लोरी लिखी जाए मुझे आशा है इन प्रतियोगिताओं के लिए भी आप जरूर एंट्री भी भेज चुके होंगे योजना भी बना चुके होंगे और अपने साथियों से चर्चा भी कर चुके होंगे मुझे आशा है बढ़ चढ़ करके हिंदुस्तान के हर कोने में इस कार्यक्रम को आप जरूर आगे बढ़ाएंगे मेरे प्यारे देशवासियों इस चर्चा से अब मैं आपको सीधे वृंदावन लेकर चलता हूं वृंदावन के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान के प्रेम का प्रत्यक्ष स्वरूप है हमारे संतों ने भी कहा है यह आशा धरी चित्त में यह आशा धरी चित्त में कहत जथा मति मोर वृंदावन सुख रंग कौ वृंदावन सुख रंग कौ काहू न पायो और यानी वृंदावन की महिमा हम सब अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से कहते जरूर हैं लेकिन वृंदावन का जो सुख है यहाँ का जो रस है उसका अंत कोई नहीं पा सकता वो तो असीम है तभी तो वृंदावन दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है इसकी छाप आपको दुनिया के कोने कोने में मिल जाएगी
पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है पर्थ। क्रिकेट प्रेमी लोग इस जगह से भली भांति परिचित होंगे क्योंकि पर्थ में अक्सर क्रिकेट मैच होते रहते हैं। पर्थ में एक सेक्रेड इंडिया गैलरी इस नाम से एक आर्ट गैलरी भी है। यह गैलरी स्वान वैली के एक खूबसूरत क्षेत्र में बनाई गई है और ये ऑस्ट्रेलिया की एक निवासी जगत तारिणी दासी जी के प्रयासों का नतीजा है। जगत तारिणी जी वैसे तो है ऑस्ट्रेलिया की, जन्म भी वहीं हुआ, लालन पालन भी वहीं हुआ, लेकिन 13 साल से भी अधिक समय वृंदावन में आकर के उन्होंने बिताया। उनका कहना है कि वे ऑस्ट्रेलिया लौट तो गई, अपने देश वापस तो गई, लेकिन वो कभी भी वृंदावन को भूल नहीं पाई। इसलिए उन्होंने वृंदावन और उसका आध्यात्मिक भाव से जुड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया में ही वृंदावन खड़ा कर दिया। अपनी कला को ही एक माध्यम बना करके एक अद्भुत वृंदावन उन्होंने बना लिया। यहाँ आने वाले लोगों को कई तरह की कलाकृतियों को देखने का अवसर मिलता है। उन्हें भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध तीर्थस्थलों वृंदावन, नवाद्वीप और जगन्नाथपुरी की परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। यहाँ पर भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कई कलाकृतियां भी प्रदर्शित की गई हैं। एक कलाकृति ऐसी भी है जिसमें भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा रखा है, जिसके नीचे वृंदावन के लोग आश्रय लिए हुए हैं। जगत तारिणी जी का यह अद्भुत प्रयास वाकई हमें कृष्ण भक्ति की शक्ति का दर्शन कराता है। मैं उन्हें इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बने वृंदावन के विषय में बात कर रहा था। ये भी एक दिलचस्प इतिहास है कि ऑस्ट्रेलिया का एक रिश्ता हमारे बुंदेलखंड के झांसी से भी है। दरअसल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही थी तो उनके वकील थे जॉन लैंग। जॉन लैंग मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के ही रहने वाले थे। भारत में रहकर उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का मुकदमा लड़ा था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में झांसी और बुंदेलखंड का कितना बड़ा योगदान है ये हम सब जानते हैं। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं भी हुई और मेजर ध्यानचंद जैसे खेल रत्न भी इस क्षेत्र ने देश को दिए हैं। साथियों, वीरता केवल युद्ध के मैदान में ही दिखाई जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। वीरता जब एक व्रत बन जाती है और उसका विस्तार होता है तो हर क्षेत्र में अनेकों कार्य सिद्ध होने लगते हैं। मुझे ऐसी ही वीरता के बारे में श्रीमती ज्योत्सना ने चिट्ठी लिखकर बताया है। जालौन में एक पारंपरिक नदी थी, नून नदी। नून यहाँ के किसानों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे नून नदी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। जो थोड़ा बहुत अस्तित्व इस नदी का बचा था उसमें वो नाले में तब्दील हो रही थी। इससे किसानों के लिए सिंचाई का भी संकट खड़ा हो गया था। जालौन के लोगों ने स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया। इसी साल मार्च में इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। हजारों ग्रामीण और स्थानीय लोग स्वतः स्फूर्त इस अभियान से जुड़े। यहाँ की पंचायतों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और आज इतने कम समय में और बहुत कम लागत में ये नदी फिर से जीवित हो गई है। कितने ही किसानों को इसका फायदा हो रहा है। युद्ध के मैदान से अलग वीरता का ये उदाहरण हमारे देशवासियों की संकल्प शक्ति को दिखाता है और ये भी बताता है कि अगर हम ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। और तभी तो मैं कहता हूं सबका प्रयास। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं तो बदले में प्रकृति हमें भी संरक्षण और सुरक्षा देती है। इस बात को हम अपने निजी जीवन में भी अनुभव करते हैं और ऐसा ही एक उदाहरण तमिलनाडु के लोगों ने व्यापक स्तर पर प्रस्तुत किया है। ये उदाहरण है तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले का। हम जानते हैं कि तटीय इलाकों में कई बार जमीन के डूबने का खतरा रहता है।
तूतुकुड़ी में भी कई छोटे आइलैंड और टापू ऐसे थे जिनके समुद्र में डूबने का खतरा बढ़ रहा था। यहाँ के लोगों ने और विशेषज्ञों ने इस प्राकृतिक आपदा का बचाव प्रकृति के जरिए ही खोजा। ये लोग अब इन टापुओं पर पाल्मेरा के पेड़ लगा रहे हैं। ये पेड़ साइक्लोन और तूफानों में भी खड़े रहते हैं और जमीन को सुरक्षा देते हैं। इनसे अब इस इलाके को बचाने का एक नया भरोसा जगा है। साथियों, प्रकृति से हमारे लिए खतरा तभी पैदा होता है जब हम उसके संतुलन को बिगाड़ते हैं या उसकी पवित्रता नष्ट करते हैं। प्रकृति माँ की तरह हमारा पालन भी करती है और हमारी दुनिया में नए नए रंग भी भरती है। अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, मेघालय में एक फ्लाइंग बोट की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। पहली ही नजर ये तस्वीर हमें आकर्षित करती है। आप में से भी ज्यादातर लोगों ने इसे ऑनलाइन जरूर देखा होगा। हवा में तैरती इस नाव को जब हम करीब से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो नदी के पानी में चल रही है। नदी का पानी इतना साफ है कि हमें उसकी तलहटी दिखती है और नाव हवा में तैरती सी लगने लग जाती है। हमारे देश में अनेक राज्य हैं, अनेक क्षेत्र हैं जहां के लोगों ने अपनी प्राकृतिक विरासत के रंगों को संजोकर रखा है। इन लोगों ने प्रकृति के साथ मिलकर रहने की जीवन शैली आज भी जीवित रखी है। ये हम सब के लिए भी प्रेरणा है। हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक संसाधन है, हम उन्हें बचाएं, उन्हें फिर से उनका असली रूप लौटाएं। इसी में हम सबका हित है, जग का हित है। मेरे प्यारे देशवासियों, सरकार जब योजनाएं बनाती है, बजट खर्च करती है, समय पर परियोजनाओं को पूरा करती है, तो लोगों को लगता है कि वो काम कर रही है। लेकिन सरकार के अनेक कार्यों में, विकास के अनेक योजनाओं के बीच मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी बातें हमेशा एक अलग सुख देती है। সেয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 83 সংখ্যক মন কি বাত কাৰ্যসূচী তেওঁ ইতিমধ্যে দেশবাসীক সম্বোধন কৰিছে। এইদৰে খবৰ আমাৰ অব্যাহত থাকিব। নিউজ কেনত এটা সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। পুনৰ স্বাগতম। আমি ইতিমধ্যে জনাইছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰণি জনাবলৈ এতিয়া উবুৰি খাই পৰিছে তেজপুৰৰ ৰাইজ। পুৱাৰ পৰাই সাংস্কৃতিক নগৰীখনত সৃষ্টি হৈছে উখল মাখল পৰিৱেশৰ। ইতিমধ্যে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বিপৰীতে অসম মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ উদগনি আৰু ৰেহাই আঁচনি 2021ৰ শুভাৰম্ভণিক লৈ ৰাইজৰ মাজত দেখা গৈছে ব্যাপক উল্লাস। প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ 8 জিলাক এই আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব তেজপুৰ কলেজিয়েট হাইস্কুল খেলপথাৰত। দিনৰ 11:30 বজাত কলেজিয়েট হাইস্কুলত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। শোণিতপুৰ জিলাৰ সৰ্বমুঠ 59,544 গৰাকী মহিলা এই আঁচনিৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব। আৰু অধিক খবৰ আমাক জনাব তেজপুৰৰ সাংবাদিক হেমন্ত কুমাৰ নাথে। আমি হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ওচৰলৈ যাম। খন্তেক সময়ৰ পিছতে আহি ইয়াত উপস্থিত হ'বহি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু আজি অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত তেজপুৰ কলেজিয়েট হাইস্কুল খেলপথাৰত মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ উদগনি আৰু ৰেহাইৰ যি আঁচনি, সেই আঁচনি আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুভাৰম্ভ কৰিব। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী অহাৰ পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছোঁ এই তেজপুৰ কলেজিয়েট হাইস্কুল খেলপথাৰৰ পৰা পৰিৱেশ। আৰু ইয়াত জিলাখনৰ 59,000 অৰ্থাৎ শোণিতপুৰ জিলাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত 59,000 মহিলাক সামৰি লোৱা হৈছে। আৰু যিসকল মহিলাই বিভিন্ন মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ লৈছিল তেওঁলোকক আজি 25,000 টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিব। আৰু দিনৰ 11:30 বজাত আহি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হ'বহি। আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিশেষকৈ মহিলাসকল আহি ইয়াত সমবেত হৈছে। আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'ম বিভিন্নগৰাকীৰ। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি তৰাজান কুমাৰগাঁও। তেজপুৰৰে? তেজপুৰৰ। আপুনি পাব আজি? পাম বুলি কৈছে, এতিয়া নাজানো। আৰু আপুনি কোন বেংকত আছিলে? আমাৰ বন্ধন বেংক। বন্ধন বেংক। নন্দিনী গোট। আপুনি চৰকাৰে যিহেতু কৈছে যে নিয়মীয়াকৈ যিসকলে ঋণ পৰিশোধ কৰি আছে তেওঁলোককে এই যি সাহায্য প্ৰদান কৰিব, আপুনি নিয়মীয়াকৈ দি আছিলে? দি আছোঁ। হয় হয়। আপুনি কোন বেংকৰ পৰা লৈছিলে? সত্যা গোট। কেনেকুৱা লাগিছে 25,000 টকা দিব চৰকাৰে? ভাল লাগিছে। বিভিন্ন মহিলা আছে, মই প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ,
দেখা গৈছিলে একাংশই ঋণ কিন্তু ঘূৰাই দিয়া নাছিল, কিন্তু আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে ঋণ পৰিশোধ কৰি আছিল, যাৰ বাবে চৰকাৰে আপোনালোকক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰি দিছে। হয়, আমি হিমন্ত শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমি যিকোনো ব্যৱস্থাৰে আমি লোনখিনি তেওঁলোকক পৰিশোধ কৰিলোঁ। গতিকে আজি যিখিনি আমি উপকৃত হ'ব পাৰিছোঁ তেওঁলৈ অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। নিশ্চিতভাৱে প্ৰথম পৰ্যায়ত ৰাজ্যৰ 8খন জিলাক সামৰি লৈছে আৰু এই আঁচনিৰ আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুভাৰম্ভ কৰিব। গতিকে আমি ইয়াত সমবেত হৈছে আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ 59,000 মহিলাক এই আঁচনিৰ দ্বাৰা উপকৃত কৰিব। কেনেকুৱা লাগিছে? 25,000 টকা আমাৰ যে খুবেই ভাল লাগিছে। আজি ছাৰ আহিব, আমাক ইমানখিনি এটা উপকাৰ কৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ হেমন্ত কুমাৰ নাথ। পৰৱৰ্তী খবৰ, ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰে দৈনিক অসমত সোমাইছে জাকে জাকে বাংলাদেশী নাগৰিক। এসপ্তাহতে কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীৰ 2টা অভিযানত জালত পৰিছে 4 বাংলাদেশী। দেওবাৰে কৰিমগঞ্জৰ চুৰাইবাৰীত 2 বাংলাদেশীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। অসম ত্ৰিপুৰাৰ সীমান্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় বাংলাদেশী নাগৰিক 2জনক। ধৃত বাংলাদেশী লোক 2জনৰ নাম মাছুম বিল্লা আৰু শ্বেখ বাপ্পে। বাংলাদেশৰ গোপালগঞ্জত ঘৰ ধৃত বাংলাদেশী 2জনৰ আগৰতলাৰ আখাউৰা সীমান্তৰে প্ৰৱেশ কৰিছিল 2ৱে। বাংলাদেশী 2জন শ্বেৰা আলী নামৰ নৈশ বাছেৰে গুৱাহাটীলৈ আহি আছিল। বাংলাদেশৰ এজন দালালক 3,000 টকা দি ত্ৰিপুৰা সীমান্তইদি ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে ধৃত 2 বাংলাদেশীয়ে। ধৃত লোকজনৰ পৰা বাংলাদেশী মোবাইলৰ সিম কাৰ্ডৰ লগতে বহু নথিপত্ৰ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এই খবৰ জনাইছোঁ কৰিমগঞ্জৰ খবৰ। কৰিমগঞ্জত ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰে দৈনিক অসমত সোমাইছে জাক জাক বাংলাদেশী নাগৰিক। এসপ্তাহতে কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীৰ 2টা অভিযানত জালত পৰিছে 2 বাংলাদেশী। দেওবাৰে কৰিমগঞ্জৰ চুৰাইবাৰীত 2 বাংলাদেশীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। অসম ত্ৰিপুৰা সীমান্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বাংলাদেশী নাগৰিক 2জনক। ধৃত বাংলাদেশী 2জনৰ নাম পুনৰবাৰ জনাম মাছুম বিল্লা আৰু শ্বেখ বাপ্পে। নাকা চেকিং কৰাৰ টাইমত আজি ৰাতি এখন শ্বেৰৱালী বাছ নাম্বাৰ AS01HC 6269 এই বাছখন আগৰতলাৰ পৰা গুৱাহাটী যাবলৈ আহে। আমাৰ নাগা চেকিং পইণ্টত ইয়াত অহাৰ পিছত আমি যেতিয়া চেক কৰোঁ তেতিয়া 2জন ল'ৰা আমাৰ প্ৰশ্নৰ ঠিক উত্তৰ দিব পৰা নাই। তেতিয়া আমাৰ ছাছপেক্ট হয়। এই ছাছপেক্টত আমি যেতিয়া ইহঁতক সোধপোছ কৰিলোঁ, লাষ্টত ইহঁতে কৈছে যে বাংলাদেশ গোপালগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছে। এজনৰ নাম হ'ল মাছুম বিল্লা আৰু এজনৰ নাম হ'ল শ্বেখ বাপ্পি। কৰিমগঞ্জত একেলগে জব্দ হৈছে প্ৰায় 8 কোটি টকা মূল্যৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী। জব্দ হৈছে 2,59,200টা নিচাজাতীয় টেবলেট। মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে টেবলেটখিনি। নিলাম বজাৰৰ বালিয়াত আৰক্ষীৰ অভিযান। সীমা সুৰক্ষা বাহিনীৰ পৰা তথ্য লাভ কৰি ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ বলিয়াত অভিযান চলাই কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে টেবলেটখিনি। আৰক্ষীৰ উমান পাই পলায়ন কৰিছে 2 অভিযুক্তই। এই খবৰ জনাইছোঁ পুৱাৰে পৰাই আমি এই খবৰ জনাই আহিছোঁ। কৰিমগঞ্জত একেলগে জব্দ হৈছে প্ৰায় 8 কোটি টকা মূল্যৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী। জব্দ হৈছে 2,59,200টা নিচাজাতীয় টেবলেট। মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে টেবলেটখিনি। নিলাম বজাৰৰ বালিয়াত আৰক্ষীৰ অভিযান। সীমা সুৰক্ষা বাহিনীৰ পৰা তথ্য লাভ কৰি ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ বালিয়াত অভিযান চলাই কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে টেবলেটখিনি। আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই অৱশ্যে পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হয় 2 অভিযুক্ত। काफ़ी दिन से हमारा नज़र था, एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा था कि यहाँ पे ड्रग्स का कारोबार होता है। आज थोड़ा कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन था तो हमने एक जॉइंट ऑपरेशन में यहाँ पे सर्च किया और जहाँ पे एक डील हो रही थी, कुछ और भी लोग थे। जब सर्च किया तो हमने टोटल यहाँ से 2,59,200 2,59,200 याबा टैबलेट्स हमने सीज किया है। उसका वैल्यू कितना है? उसका लगभग 8 से 10 करोड़ के आसपास वैल्यू है। और उसमें ड्रग्स को भी देखा गया है कि कुछ ड्रग्स हमें गिनी बैग में मिला है और बाकी उनका एक मोडस ऑपरेंडी था कि उन्होंने ज़मीन के नीचे मिट्टी खोद के बास्केट में रख के ड्रग्स को छुपाया हुआ था। कितना आदमी इसमें इन्वॉल्व था और कितने को पकड़ा है आप लोग ने? इन्वॉल्वमेंट तो काफ़ी लोगों का सुनने में आ रहा है अभी, लेकिन फ़िलहाल हमें एक ही एप्रीहेंड किया है।
আনফালে 8 কোটি টকাৰ ইয়াবা টেবলেটৰ সমান্তৰালকৈ কৰিমগঞ্জত জব্দ হৈছে 4 কোটি টকাৰ হেৰইন শনিবাৰে নিশা বিএছএফৰ অভিযানত জব্দ হৈছে হেৰইনখিনি ৰাতাবাৰীত জব্দ হৈছে নিষিদ্ধ সামগ্ৰীখিনি এখন 4-চকীয়া বাহনত অনা 45টা চাবোনৰ বাকচত সুমুৱাই আনিছিল হেৰইনখিনি 4 কোটি টকাৰ হেৰইনৰ লগতে বিএছএফে জালত পেলাইছে 3 সৰবৰাহকাৰীক লগতে হেৰইন কঢ়িয়াই অনা AS12D1969 নম্বৰৰ বাহনখনো জব্দ কৰিছে বিএছএফে আৰু তাৰ পাছত গতাই দিছে আৰক্ষীক বিএছএফে জালত পেলোৱা দুটা সৰবৰাহকাৰীৰ ঘৰ মিজোৰামত আন্তুৰ ঘৰ কৰিমগঞ্জৰ ৰাতাবাৰীত ধৃত সৰবৰাহকাৰী কেইটাৰ নাম লালথাংগা জৌৰাম্মা বিয়া আৰু জামিল আহমেদ সম্প্ৰতি ৰাতাবাৰী আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে তিনিওটা সৰবৰাহকাৰী এদৰে 12 কোটি টকাৰ ইয়াবা টেবলেট জব্দ হৈছে 12 কোটি টকাৰ নিষিদ্ধ সামগ্ৰী জব্দ হৈছে তাৰ ভিতৰত ইয়াবা টেবলেট 8 কোটি টকা আৰু হেৰইন 4 কোটি টকাৰ জব্দ হৈছে বিএছএফ আৰু আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে কৰিমগঞ্জ আৰক্ষীৰ এয়া এক বৃহৎ সফলতা আৰু ইয়াৰ সৈতে সামৰিছো নিউজ স্কেন নমস্কাৰ মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ